Hello friends. Today we are moving to the another lesson of 10th standard, that is Alchemy of Nature. It's an article written by Raksha Baradia. It's describing about how important is our nature is. Actually the alchemy means the chemistry or the mysterious power. Chemistry or mysterious power of the nature that is discussing in this lesson or in this article. And the article is beginning or the lesson is beginning with a quote of William Blake. He's one of the famous poet and a writer in English. So it's starting with one of his quote, and that is to see a world of grain of sand and a heaven in wild flower. Hold infinity in the palm of your hand, and eternity is an hour. And the meaning is also described below there. Something is as tiny as grain of sand can spark off an idea of imagination of a huge significance to the world. A small piece of sand, सैंड मिट्टी का एक छोटा पार्ट्स भी हमारा पूरा दुनिया की एक इमेजिनेशन हमारा दिल में लेके आता है. ए स्मॉल पार्ट ऑफ सैंड इज ऑल्सो क्रिएट एन इमेजिनेशन. वो एक छोटा सैंड भी हमको एक इमेजिनेशन देता है. And as well as it is also a portion of the world. It is also a part of the world. That is also very important. A small portion of sand is also very important to the nature. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever. एक छोटा फूल, a small flower is also give the beauty of the world. We can experience the beauty of world even in a small flower. एक छोटा फूल का ब्यूटी वो ये पूरी दुनिया की ब्यूटी हमको दिखा देता है. एंड ओनली वन शुड हैव द आई एंड टाइम टू सी इट, बट वी शुड हैव द टाइम एंड टाइम फॉर टू सी इट. लेकिन हमको वो एंजॉय करने के लिए टाइम स्पेंड करना है. देन इन्फिनिटी इज एंडलेस space, but your small palm can hold the destiny of earth through your effort. The destiny means the point that we want to reach. हमको कहाँ जाना है, और destiny और the दुनिया की destiny or the destiny of the earth is in our hand. That destiny is actually is in our hand. Only we can save our earth with our effort. हमारा effort से हमको हमारा दुनिया सेव कर सकता है. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make difference to the world forever. और हमारा eternity means that is related to our soul, the beauty of the earth, inside the earth or inside us. That is but just an hour. एक घंटा हम spend किया, just 1 hour we are spending for the world, make a huge difference. हमारा दुनिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमको कर सकता है. ग्रेट डीड्स कैन सरप्रेस द लिमिट्स टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई. हम एक बहुत बड़ा चेंजेस हमारा दुनिया में क्रिएट किया तो वो हम हमेशा रहता है. इट्स एंडलेस, इट्स फॉर एवर, इट विल नेवर डाई. एंड देन वी आर मूविंग टू द लेसन. वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर activities and nature as a way relaxing and enhancing our well-being. We instinctively means meaning is given there by a natural instinct when we are moving to the nature. Simply when we are moving to the nature or outdoor activities, that giving a relaxation, हमको एक बहुत relaxation देता है, हमारा mind बहुत free हो जाता है. And enhance means developing our well-being. हमारा अच्छा रहने के लिए वो बहुत नेचर बहुत हमको सपोर्ट कर देता है. नेचर सूतस एंड नर्चर्स. सूतस मीन्स calm, it's very calm, and it's also nurture means care, it's very calm and care for us. Nature fulfills and motivates. Nature fulfills our needs, what we need, all the things we are getting from the nature. हमको क्या क्या चाहिए वो सब चीज़ हमको नेचर से मिलता है. And as well as it is motivating, how it is motivating that we can study in the lesson throughout. Nature's whispers and commands. Whispers means बहुत धीरे से बात करना, and it will also command for us. How it is, that is also we can discuss in this lesson. Are you listening?
but we have to listen the voice of the nature. When I do, it leaves me a complete awe. What is the meaning of awe? Great wonder and amazement. When I do, it leaves me a complete awe. हम ये दुनिया देखने के लिए शुरू किया तो हमको बहुत सरप्राइज हो जाएगा, अमेजमेंट हो जाएगा. हाउ इट इज़? वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन. एवरी फोर्टनाइट द फ्लावर बूम्स ऑन इट, बिग, ब्राइट एंड टेंडर. हर हमारा गार्डन में एक हिबिस्कस फ्लावर, व्हाट आर इट में, ए स्मॉल फ्लावर दैट विज ब्लूम्स मीन्स बड़ा हो जाएगा, है ना. ब्लूम्स every day and it became very big and then we became very bright and it became very strong within a day. It became very big, bright and strong. Through the day it smiles. वो दिन भर वो हमेशा हंसते रहता है. With the sun dances with the wind, but as the evening approaches. एक दिन सुबह क्या होता है? The flower will smile and with that will dance in the विंड के साथ वो डांस करेगा. और व्हेन द इवनिंग अप्रोचेस, लेकिन इवनिंग का टाइम को क्या हो जाता है? इट स्टार्टेड विल्टिंग मीन्स डाइंग एंड ड्रॉपिंग. इट बिकेम वेरी ड्राई. द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकेम्स वन विद द अर्थ अगेन. और एक दिन में नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हो जाता है? इट स्टार्टेड टू विदर्स मीन्स स्टार्टेड टू फॉल डाउन इट्स लीव्स completely. By the evening it falls and became one of the earths again. और गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और again that will be again a part of that nature. The flower comes to life only for a day, yet it does so full splendor means happiness. सिर्फ एक ही दिन के लिए एक फ्लावर हमारा दुनिया में आ जाता है and became very happy throughout the day. What if we too lived our life, however short and fullest? हमारा लाइफ भी, our life is also very short, but we have to fulfill our dreams. हमारा लाइफ हम पूरा देख के समझ के जो कुछ करना ही पड़ेगा. The upcoming portions we can discuss in the next class.